All right, welcome back. Under the influence of Cyclone Montha, a high alert has been issued across Telangana, particularly in the eastern districts, with severe rainfall predicted on October 28th and 29th. And according to the IMD, the deep depression over the southeast Bay of Bengal is likely to intensify into a severe cyclonic storm by the morning of October the 28th. The system is expected to cross the Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam near Kakinada on the evening or night of the 28th of October, packing winds of 90 to 100 kilometers per hour, gusting up to 110 kilometers per hour. As of 8:30 a.m. today, the depression was moving west-northwest at about 6 kilometers per hour, centered near latitude of 11.2 degrees north and longitude of 87.1 degrees east. I beg your pardon, roughly 620 kilometers west of Port Blair, 780 kilometers east and southeast of Chennai, and 830 kilometers south-southeast of Kakinada. It is expected to continue strengthening as it moves northwestward and later north-northwestward, becoming a severe cyclonic storm by the 28th of October. With the cyclone nearing a landfall, eastern Telangana districts including Komaram, Bhim, Asifabad, Mancherial, Jagtial, Rajanna and Sirchela, Karimnagar, Mulgu and various other places are forecast to receive 150 to 220 millimeters of rainfall, which could potentially lead to flash floods. All right, well, the Indian Meteorological Department has in fact put out a tweet as well. They have laid out most of the information that I read out. It in fact also goes on to show you a trajectory of the winds as well as the direction of the storm as well. Akshay Maharana, my colleague, is joining us at this point in time from Odisha to give us more details about this. Akshay, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो साइक्लोन जो मोंथा है, कहीं ना कहीं ये काकीनाडा के आसपास यानी कलिंगपट्टनम और मछलीपट्टनम के जो बीच में ये लैंडफॉल करने वाला है। लगभग 90 से 100 किलोमीटर के रफ्तार से हवाएं बहने की संभावना जताई गई है। तो कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ चक्रवात के साथ साथ जो तूफान यानी उसके साथ साथ जो बारिश लाने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस तूफान के साथ साथ बारिश आने वाला है और बारिश तो लगभग उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उड़ीसा के 14 जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है और यहाँ हेवी रेनफॉल होने की जो संभावना जताई गई है। कहीं ना कहीं इन इलाके में ज्यादातर जो ओड्राफ की टीम है, वो टीम को कैसे डिप्लॉयड किया जाए, लोग कैसे मुश्किलात में वहां ना पड़े, लोगों को कैसे इवैक्यूएट करके नजदीकी जो सुरक्षित स्थान है वहां पहुंचा जाए, तमाम बारे में अब वो कहीं ना कहीं सरकार लगातार अब मीटिंग कर रही है। तमाम एसआरपी से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड में हैं। अभी भी अब यहाँ जो हम राजीव भवन में हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मीटिंग चल रहा है। मिनिस्टर जो सुरेश पुजारी हैं वो यहाँ एक मीटिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जा चुका है कि कैसे इन जो 14 इलाके हैं, कैसे वहां ज्यादातर जो बारिश होगा तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति होगा, तो जल भराव की स्थिति में कैसे लोगों को मुश्किलात की सामना ना करना पड़े, लोग कैसे मुश्किलात के हालात में ना पड़े वहां। तो कहीं ना कहीं ओड्राफ के जो टीम है वहां उनको भेज दिया गया है। उनको वहां कहीं ना कहीं अब कैसे जो लोग वहां रह रहे हैं वो लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, उसी में लगे हुए। तो कहीं ना कहीं ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हिट करने वाला है ये जो चक्रवात मोंथा, लेकिन उसके साथ साथ तमाम आंध्र प्रदेश से लेकर तमाम उड़ीसा के इलाके में बारिश होने वाला है और वेस्ट बंगाल में भी बारिश होने वाला है और कहीं ना कहीं तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में बारिश होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये तटीय इलाके में जो चीफ मिनिस्टर हैं लगातार अक्षय आपने बारिश की बात की और मैंने भी दर्शकों को बताया कि जिस तरीके से बारिश के आसार हैं और जिस मात्रा में बारिश होने की संभावना है, फ्लैश फ्लड्स भी हो सकते हैं, जान और माल का नुकसान भी हो सकता है। क्या क्या तैयारियां कर रहा है प्रशासन अभी? देखिए, ये एक ही चक्रवात नहीं, चक्रवात
उड़ीसा में आ चुका है। चक्रवात को निपटने के लिए तमाम जो टीम है, कहीं ना कहीं वो टीम यहाँ मुस्तैदी तैनात होते हैं। टीम कहीं ना कहीं जो इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं जहां ज्यादा जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, कैसे मुश्किलात ये कैसे वहाँ जो सुरक्षित स्थान है वहां तक पहुंचाते। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादातर आपको बता दें कि मालकानगिरी, कोरापुट और जो गजपति गंजाम जैसे इलाके हैं, इन इलाकों में जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं तो लैंडस्लाइड होने की जो संभावना है वो संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो इस इलाके से कैसे लोगों को कहीं ना कहीं वो स्थानांतरित किया जाएगा, लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा, ये भी एक कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं ये जो उड्राफ की टीम है, जो रेस्क्यू टीम है, वो टीम जो कई जो साइक्लोन में काम किए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके जो काम है सराहनीय काम है। तो कहीं ना कहीं ये अब कैसे इस जो चक्रवात को निपटते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं जो 14 जिले में बारिश होने वाला है उसमें जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके में भारी बारिश होने की जो संभावना है, कहीं ना कहीं इन इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां लैंडस्लाइड की खतरे बढ़ जाती है। तो वहां भी कैसे लोगों को वहां सुरक्षित रखा जाएगा वो भी एक आपने कहा कि बारिश तो की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। अभी हमने देखा कि हिमाचल में, उत्तराखंड में इत्यादि जगहों में जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हुए और क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी जो एक त्रासदी देखने को मिली, क्या उससे प्रशासन कोई सीख ले रहा है? क्या उसको लेकर कोई तैयारी की जा रही है? देखिए, प्रशासन अब मुस्तैदी से तैनात होने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इलाके हैं, कहीं ना कहीं जो रिमोट इलाके हैं जहां जाना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा काम है, जहां पहाड़ी इलाके से गुजरना पड़ता है, वहां कैसे जो टीम है वो पहुंचेगी, कैसे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करेगी, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है। फिर भी आपको बता दें कि हाल ही में जो गजपति में लैंडस्लाइड हुआ था, 2 लोगों की कहीं ना कहीं वो लापता होने की जो खबर आई थी, कहीं ना कहीं वो अभी वहां ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं वहां भी खतरा मंडरा रहा है कि कैसे वहां ज्यादा बारिश होगा तो लैंडस्लाइड की खतरा वहां नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं इन इलाके में कैसे ज्यादातर जो उड्राफ के टीम है, ज्यादातर जो रेस्क्यू टीम है, कैसे तैनात हो गए, कैसे तमाम इलाके से लोगों को कैसे इवैक्यूएट करके तमाम इलाके से कैसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाएगा, ये कड़ी चुनौती है। फिर भी प्रशासन अब तैनात पूरे मुस्तैदी से तैनात होने के लिए कोशिश कर रहा है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर हैं और जो एसआरसी है, तमाम बारे में जो डीएम है, उन डीएम के जरिए तमाम ग्रास रूट के अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कैसे लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए, कैसे लोगों की जान माल की नुकसान ना हो, उसी के तहत काम करेंगे। लेकिन बारिश कितना हो अक्षय, मैं आपके पास वापस आऊँगा। लेट मी इन फैक्ट रोप इन मिस्टर आनंद शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी, former ADG of the IMD, into this conversation as well. Mr. Naveen Bhatnagar, former DIG, NDRF, also joins us on the conversation to talk more about this. Mr. Sharma, I'll begin with you, sir. I hope you can hear me. Yes, yes. All right, another intimidating weather anomaly that is about to strike various parts of the country. Your predictions on the kind of damage and destruction that something like this can cause, looking at the speeds of the winds that I read out in my opening monologue, it seems to be a precarious event. Oh, see, whenever cyclone comes, naturally along with cyclone, we have mainly 3 kinds of effects, or I should say कि cyclone brings damages by 3 ways. One is heavy, very heavy and extremely heavy rain. Second is very strong winds, like you said, 110 kilometers per hour. And third is storm surge. That means sea waves rise to few feet to meter in height. So these are the 3 ways which cyclone brings damages. So already we are expecting winds of
100 kilometers and gusting to 110 kilometers per hour once it becomes a severe cyclonic storm, which we are expecting to cross Kakinada, near Kakinada, in Machilipatnam and between Kalingapatnam. So once this happens, naturally, there will be damages to the kacha houses. Roof tops of the kacha houses will blow off. Power lines can break. Trees will be uprooted. Your paddy crop will be affected. Papaya, banana trees will be affected. And there will be possibility of landslides in the mountain regions and hilly regions of the coastal areas. And along with that, low-lying areas, there will be flooding. So all these damages are expected and generally happen when a cyclone makes a landfall. That is the time you have the maximum damages happening. So we are expecting all these things, but good thing is that, as they said, Odisha and Andhra government, these states have kind of experience over the years because regularly, these cyclones either hit Odisha or Andhra Pradesh. So that way they are quite prepared. There are shelters. So naturally they will move the people from the vulnerable areas to the safer areas. And fishermen have been advised not to venture into the hills, and people who have gone into the sea, they have been asked to come back. At the same time, tourists and all, so there is proper warning, well disseminated warning through Facebook, through X, and everything over the website. All the information is very well disseminated, and I think government is well prepared. And if you are well prepared, you can tackle any of the eventualities. But only thing is that sometimes some people, in fact, in spite of knowing all this, they don't listen to weather warnings and they lose their life that way. So, but our target is to make it zero mortality. I hope, with the best kind of preparation, NDMA, government, state administration, all working in harmony, we can prevent or maybe make the damages to minimum. Of course, physical damages will be there, but human damages and cattle and animals, we can reduce this drastically. Right. We have some breaking news coming in. Manorama Mohanty, Director of IMD Bhubaneswar, has made a statement on the current status of Montha. She stated that the depression is over the southeast Bay of Bengal, 930 kilometers southeast of Kupulpur. It is likely to move west-northwest, and it may intensify into a cyclonic storm within 24 hours, becoming a severe storm by the 28th of October morning. She goes on to state that the storm will move northwest across the Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam near Kakinada on the 28th of October, evening or night as a severe cyclonic storm. Let's listen into what she had to say. The deep depression lies over southeast Bay of Bengal, and it is about 930 kilometers south-southeast of Gopalpur, and it is very likely to move west-northwestward and intensify into a cyclonic storm during next 24 hours. And further intensification will be there as a severe cyclonic storm by the morning of 28th October, and it will continue to move northwestward, and it is very likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening or night of 28th October as a severe cyclonic storm. While crossing the coast, the wind speed will be around 90 to 100 km per hour, gusting to 100. Mr. Naveen Bhatnagar, former DIG, NDRF, also with us on the broadcast. Mr. Bhatnagar, of course, we have discussed the various ifs and buts of this particular cyclone. But the fact of the matter is that devastation in the last few weeks has apparently brought a number of questions to the fore for a number of governments, including the central government. Rains are going to happen every year. Cyclones are going to keep coming. What level of preparedness is needed at this point in time, considering the fact that weather anomalies are more rampant than ever before? Yeah,
So 2 days back, we got the information about it, and immediately our teams were ready, and they were sent to the particular places where it may happen or it may hit. So in the coastal area of Odisha, Andhra, and other places also, and a few teams at Bengal and the Kerala and other places also. We are keeping watch day and night. We have set up the control room, and we are having the direct touch with IMD. IMD people are giving us the time and time the update about the speed of this cyclone and the situation of that particular area. And of course, as our Sharmaji told, that already our governments are ready for that, and already it is set drill in such conditions. Already exercises were done by the state government as well as the NDRF and as well as the other NGOs also. And we were giving the full support to the people for their safety and their shelter places and the latest updates. And accordingly, we are taking care about it for the safety of the people as well as keeping ourselves ready for this situation, because after the cyclone is over, the heavy to heavy rain, flash flood, landslide, and such a thing comes, and which may occur the devastating situation in this particular area. It is being left behind, because especially in the coastal area, what happened, the cyclonic waves and the other pressure of the water, it may damage of the road, rail, and pipeline, sewer line, and the nearby places in 200 meter area of that particular place where it hits, or I fall is there, or the particular cyclone hits. So definitely people are ready. State governments, all the state governments are ready. There is a head drill, and they are doing accordingly. But as a special, as a experts, we the NDRF people, they day and night, they are keeping watch. They are convincing the people, and we are saying them to vacate their houses and to shift in the particular safe places. And we have also giving and supporting them in providing the vehicles and all these things to vacate their houses which are in the danger zone, or you can say the red zone area. So we are shifting them 100% so that their life can be saved. And accordingly, the animals are also being rescued and made free so that they can shift to the safer places. So all the preventive measures as a NDRF we are doing with the help of state government, and state government is definitely they are ready, because this is a set drill for every year. So it is not the new one. But this time the cyclone is not so severe. It is in the speed of 90 to 100 kilometers. And when it will be hitting the coastal area, so speed will come down. But the rain and the side effects, as already I have mentioned, so definitely damage will be there, but not so heavy. Yeah. All right, some breaking news coming in view of the current situation in Cyclone Montha. Control room contacts have been released, and Cyclone Montha relief preparedness in Kakinada district is underway. The list includes divisional offices and Tehsildar offices. All the offices are those located in the Kakinada district, like the RDO's office and the collectorate as well. Akshay, my colleague, with us on the broadcast to give us more details about this. Akshay, प्रशासन ने अपनी तरफ से सारे नंबर
जिन पर संपर्क किया जा सकता है वो जारी कर दिए हैं। बस ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको लोगों तक पहुंचाने में भी एक चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो जब चक्रवात होता है तो चक्रवात को निपटने के लिए तमाम डिपार्टमेंट की ओर से ये प्रयास किया जाता है कि कैसे लोगों को मुश्किलात की सामना ना करना पड़े, जनहानि ना हो। उसी के तहत तमाम जो टीम है वो लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नया इनिशिएटिव नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हेल्पलाइन जारी किया जा रहा है, तो उन रिहायशी इलाके में जैसे लोगों की मुश्किलात बढ़ जाएगी या लोग कोई मुश्किलात की सामना करेंगे, तो उसी लैंड फोन के जरिए उन फोन कर सकते हैं, उन हेल्पलाइन के जरिए लोग फोन कर सकते हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो जो अधिकारी है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हेल्पफुल कार्य होता है कि कैसे जो रिहायशी इलाके में लोग रहते हैं, जहां लैंडस्लाइड की खतरा ज्यादा रहता है, जहां लोग जलभराव की स्थिति में रहते हैं, तो वहां कैसे लोगों तक ये पहुंचेगा, लोग तक ये अवेयरनेस पहुंचेगा, लोग तक ये हेल्पलाइन नंबर पहुंचेगा कि लोग आसानी से ये नंबर में डायल करके उन अधिकारी तक पहुंचा पाए कि हम यहाँ फंसे हुए हैं या हमको यहाँ जो मुश्किल की सामना करना पड़ रहा है। इस जानकारी के लिए हमारे से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऑलराइट, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट। मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑन द अदर साइड।